Yashodanandana Yamunatira Yamunatira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Jai Gurudev, Gurudeva, Jai Gurudev. Jai Guru Hari Bol, Hari Bol, Jayam Vishnupad Paramahamsa Pariva Jagacharya Astute Recitas Ismadi Divine Bliss ISKCON Founder Acharya Jagadguru Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai.
Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Astutarasita Sisimati Divine Bliss Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Ananda Guri Vaishnavanda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Jiva Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopal Govinda Shamaku Radha Kunna Giri Garavardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Navadvip Mayapur Dham Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Ganges Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaura Premanandi All glorious assembled devotees. All glorious assembled devotees. All glorious assembled devotees. Glory to Sri Sri Guru Sri Gauranga. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashtapai Sabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloki Bhakti Ripavati Naisiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnanatimirandasya Jnanandana Savakaya Chakshuruntam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Ati Swapadantikam Vandeham Sri Gurun Sri Yudapadakamanam Sri Gurun Vaishnavansha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Sadevam Sadvitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagano Bhavita Sri Visakham Sa He Krishna Aruna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Bhumane Tapti Vrindavaneshwari Vrisavani Namavi Hari Priya Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuyayivacha Patitanam Bhagavyo Vaishya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Gantara Sriman Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. No need.
No need. I will be reading from text 9 till 12. So 9, 10, 11 does not have any purpose. We'll just read. 9. 9, 10, 11 don't have any purpose. We'll just read that. And 12 has a small purpose. So we'll focus on that. Fourth purpose. Okay. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 1. Genealogical table of the daughters of Manu. And we are continuing from text 9. 9 to 12. स्वयं मनु के दोनों पुत्र प्रियवर तथा उत्तान का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए और उनके पुत्र तथा पौत्र उस काल में तीनों लोगों में फैल गए। 10वां श्लोक। हे पुत्र, स्वयं मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया। मैं इनके संबंध में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ और तुम उनके विषय में प्राय पूरी तरह सुन चुके हो। 11वां। स्वयं मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी, जो प्रजापतियों में से एक थे। दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैले हुए हैं। Jaha Karadama Sutta Prokta Nava Brahmarsi Patnaya Tasam Prasuti Prasanvam Rochamanam Vidhodame Jaha Karadama Sutta Prokta Nava Brahmarsi Padanaya Tasam Prasuti Prasavam Ruchamanam Nibhodame Jaha Karadama Sutta Prokta Nava Brahmarsi Patnaya Tasam Prasuti Prasavam Rushamanam Nibodhame
वर्ड शब्द यहाँ जो गर्दन सुधा गर्दन की कन्याएं उल्लेख किया गया नव नौ ब्रह्म ऋषि आध्यात्मिक ज्ञानवान ऋषियों पत्नियां आसाम उनकी प्रसूति प्रसवम पुत्रों तथा पौत्रों की पीढ़ियां प्रोच्यमान वर्णित होकर समझने का प्रयत्न करो मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही बता चुका हूँ कि वे 9 विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई। अब मैं इन 9 कन्याओं के संतानों का वर्णन करूंगा, तुम मुझसे उनके विषय में सुनो। श्री गोपाल जी द्वारा तात्पर्य श्री गोपाल जी की। तीसरे स्कंद में बताया जा चुका है कि देवहूति से कर्दम का किस प्रकार 9 पुत्रियां प्राप्त हुई और बाद में किस प्रकार मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ जैसे ऋषियों को सौंप दी। Text number 9. Priya Vratu Tanapado Na Manu Patru Aho Jasau Tat Putra Putra Nuprit Tinam Anubritam Tat Anvaram Swayambhuva Manu's 2 sons, Priyavrata and Uttanapada, became very powerful kings, and their sons and grandsons spread all over the 3 worlds during that period. This is a genealogical timetable for the daughters of Manu. Swayambhuva Manu is a great personality.
He's a Prajapati. वो प्रजापति थे। At the same time, he is a very powerful, saintly person. प्रजापति होने के साथ साथ वो एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे। Although he is in management, वो वैसे तो मैनेजमेंट वाले हुए, his spiritual vision is perfect, लेकिन उनका आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण था वो एकदम सही था, सटीक था। not affected by the dualities of management. और वो किसी तरह से भी मैनेजमेंट की जो द्वंद्वता होती है उससे प्रभावित नहीं था उनका आध्यात्मिक। It is said that he has two powerful sons, ऐसा यहाँ बताया गया उनके दो बहुत ही शक्तिशाली पुत्र थे, Priyavrata and Uttanapad. प्रियव्रत और कामनाथ। You can see from here that because of what he is, his own children are also the same as powerful as himself. हम यहाँ देख सकते हैं जिस तरह के वो स्वयं थे, वो मनु उसी तरह के उनके पुत्र भी और शक्तिशाली थे। He selected his own children. उन्होंने अपने पुत्रों को स्वयं चुना था। I want to answer to him. Can outside. Must he do it inside? No one forced anyone to attend the class. यहाँ पर आपको कोई जबरदस्ती नहीं बिठाया कक्षा के अंदर। You have an important thing to do. You are not forced to be in the class. कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं बुला रहा है, भौतिक शुद्ध विषय में चर्चा कर रहे हैं। You can attend to that. There's no problem. इच्छा है आपकी और जो कभी कार्य का बोल सकते हैं। The process of Bhakti is a voluntary thing. भक्ति एक स्वतंत्रता का विषय है। You can choose to follow and choose not to follow. या आपके ऊपर है, आप उसको पालन करना चाहें नहीं कर सकते। But if we have chosen something, it is very important for us to devote ourselves to that thing we have chosen. लेकिन अगर हमने उसे चुना है भक्ति को, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि फिर हम पूर्ण रूप से उसमें ही रहें। That is the only way we can make progress. इसी तरह से भक्ति में बढ़ सकते हैं। Either it is material or spiritual. Whatever we have selected, let us devote ourselves to it. चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, आपने कोई भी मार्ग चुना है, अगर आप उसमें पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, तभी उसमें प्रगति कर सकते हैं। Divided attention cannot make anyone successful in anything. जो हमारा ध्यान है अगर दो जगह रहेगा एक साथ, तो हम किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ सकते। Srila Prabhupada perfectly designed his movement. कोई बात ये है जो ये हमारा मूवमेंट है, कृष्ण मूवमेंट बहुत सुंदर तरीके से इसका निर्माण किया है। He didn't hang anyone somewhere. He perfectly defined and designed his movement. उन्होंने स्वयं बहुत ही पूर्णता से उसका डिजाइन किया है। If we consider ourselves followers, then we should follow it as it is. अगर हम श्री प्रभुपाद के अनुगत्य में समझते हैं अपने आप को, तो उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। Then you will succeed. तो तभी हम अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। That is the meaning of follower. यही अनुगत्य का मतलब है। We are talking about Swayambhuva Manu, हम यहाँ पर स्वयं गुरु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। how he selected his children. इस तरह से उन्होंने अपने His children were not imposed on him. इस तरह से उन्होंने अपने संतानों को चुना, उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं भेजे गए कि ये आपके संतान हैं, उन्होंने खुद चुना। Therefore, they are as powerful as himself. इसलिए वो उन्हीं की तरह शक्तिशाली थे। Text number 10 says, My dear son, हे पुत्र,
Swayambhuva Manu handed over his very dear daughter, Devahuti, to Kadamamuni. स्वयंभू मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया। I have already spoken to you about them, मैं इनके संबंध में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ and you have heard about them almost in full. और तुमने इनके विषय में प्राय पूरी तरह से सुन चुके हो। Devahuti did not have many boyfriends and selected one. देवहूति के बहुत सारे मित्र थे। Devahuti did not have many boyfriends देवहूति के बहुत सारे मित्र नहीं थे। and selected one. She didn't. आज के समाज में जैसे देखते हैं कि बहुत सारे मित्र होते हैं और उनमें से आप किसी को चुनते हैं, देवहूति के साथ ऐसा नहीं था। Everything was perfectly arranged ये सब बहुत अच्छे तरह से सुयोजित किया गया था by her father. उनके पिता के द्वारा स्वयंभू मनु। The same thing with her husband. Kadamamuni did not have many girlfriends and selected one. और इसी तरह हम देखते हैं कर्दम मुनि के भी ऐसे ही बहुत सारी मित्र स्त्रियां थी, लेकिन उन्होंने भी एक ही को चुना, वो थी देवहूति। We should know where our problems are coming from. We should know where our problems are coming from. इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जो जीवन की परेशानियां वो कहाँ से आ रही हैं। Our problems are coming from our whimsical behavior. हमारे जो जीवन की परेशानियों को हम जो बिना सोचे कुछ भी व्यवहार करते हैं उसकी वजह से। Kadamamuni was performing austerity in the forest, कर्दम मुनि ने तपस्या की थी जंगल में जाकर, and he has a desire. और उनकी इच्छा थी। Krishna in the heart knows what you are looking for. और कृष्ण भगवान उनके हृदय में विराजते थे, वो जानते थे कि वो क्या चाहते हैं। And Lord Krishna came to him और भगवान उनके पास आए and told him, और कहा, the result of your austerity will be fulfilled in 3 days from today. और उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर जो आपने तपस्या की है उसका फल आपको मिलेगा। He didn't struggle, he simply performed his prescribed duty perfectly. उन्होंने अपने मनचाहे में कुछ नहीं किया, उन्होंने जो उनको बताया गया था मार्ग उनका, And the result came by Krishna's personal arrangement. और जो उनको फल मिला वो भगवान के द्वारा अरेंज करने का। So Krishna told him, the result of your austerity will manifest in 3 days. तो कृष्ण भगवान उनको स्वयं बताया कि जो आपने तपस्या की उसका फल आपको 3 दिन में मिलेगा। He left. और चले गए। Exactly 3 days. Exactly 3 दिन के बाद Swayambhuva came with his daughter to meet him in the forest. और 3 दिन के बाद स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति के साथ कर्दम मुनि को मिलने के लिए जंगल में गए। And he gave his daughter to him. और अपनी पुत्री देवहूति को उनको प्रदान किया। Kadamamuni was a hermit. Kadamamuni is a tapasvi in the forest. वो जंगल में तपस्या कर रहे थे कर्दम मुनि। He was not having house, उनके पास घर नहीं था, no money, और ना ही लक्ष्मी थी, no proper facility. किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी उनके पास, क्योंकि वो तपस्वी थे। But Swayambhuva Manu gave his daughter to him. लेकिन फिर भी स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री को उनको प्रदान किया। He told him, और कहा, in your heart, हृदय में you have a particular girl you are looking for as a wife. My daughter is exactly the image of the girl you have in your heart. तो स्वयं उन्होंने आकर उनको कहा कि कर्दम मुनि को, जैसा आपके हृदय में एक पत्नी के विषय में आप चिंतन करते हैं, मेरी पुत्री में वो सारे गुण हैं, बिल्कुल वैसी ही है। Exactly as you wanted. जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल उसी तरह से। And in her own heart, और उनके हृदय में
exact person she wanted as her husband is you. और इसी तरह से देवहूति जैसा अपने हृदय में चाहती थी उसी तरह के She never thought of any man except you. और वो बताते हैं कि देवहूति ने भी किसी और के बारे में विचार नहीं किया सिवाय आपके। Therefore, इसलिए both of you have the same taste and the same character. इसलिए आप दोनों के एक जैसे विचार हैं और एक तरीके की सोच है। So you are suitable for husband and wife. इसलिए आप बिल्कुल पूर्ण रूप से पति पत्नी बनने के लिए Do not hesitate to accept her as your wife. इसलिए आप बिल्कुल भी संकोच ना करें वो अपनी पत्नी स्वीकार करने में। This is how things should be arranged. इस तरह से व्यवस्था की जाती है भगवान में। By the authority. जो वरिष्ठ होते हैं अथॉरिटी होती है उनके द्वारा इस तरह से व्यवस्था की जाती है। By the authority, things should be arranged, and we followers will simply accept it. जो वरिष्ठ होते हैं वो व्यवस्था करते हैं और जो फॉलोअर होते हैं अनुगत्य होते हैं उनसे पालन करना होता है। We will be happy and successful. इसी तरह से हम खुश रहेंगे आनंदित रहेंगे और सक्सेसफुल होंगे। Text 11. Swayambhuva Manu handed over his daughter Prasuti to the son of Brahma named Daksha. स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दी, Who was also one of the progenitors of the living entities. जो प्रजापतियों में से एक थे। The descendant of Daksha are spread throughout the three worlds. दक्ष के वंशज तीनों लोगों में फैले हुए हैं। The same manner, Prasuti is given to Daksha in the same manner. प्रसूति जो दूसरी कन्या थी वो भी दक्ष को उसी तरह से दी गई जैसे दिखाया जाता है। The taste and character. उनके स्वभाव और चरित्र के मिलाव के साथ। That's a perfect way for arranging marriages. ये एक सही तरीका है विवाह को स्थापित करने का। Swayambhuva Manu knows this, स्वयं उन्हें जानते थे and he is perfectly arranging everything. और वो इसी तरह से सुबह से ढंग से सब चीजों को रच लेते हैं। In this way, they were all happy with each other in their marriage. और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम सब प्रसन्न रह सकते हैं विवाह में। Prasuti was not quarreling and fighting with Daksha. प्रसूति हर समय दक्ष के साथ झगड़ा नहीं करती। Devhuti and Kramuni did not fight and quarrel. और इसी तरह से हम देखते हैं देवहूति और क्रममुनि भी कभी झगड़ा नहीं करते Because everything was perfectly arranged. क्योंकि सब चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से रची हुई थी। Text 12. You have already been informed about the 9 daughters of Kadamamuni. मैं तुम्हें क्रममुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही बता चुका हूँ, Who were handed over to 9 different sages. कि वे 9 विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई थी। I shall now describe the descendants of those 9 daughters. अब मैं 9 कन्याओं की संतानों का वर्णन करूँगा। Please hear from me. तुम मुझसे उनके विषय में सुनो। Prabhupada said, the 3rd canto has already described how Kadamamuni begot 9 daughters in Devhuti, and how all the daughters were later handed over to great sages like Marichi, Atri, and Vasishtha. श्री भगवान के तात्पर्य बताते हैं तीसरे स्कंद में बताया जा चुका है कि देवहूति से कर्दम को किस प्रकार 9 पुत्रियों प्राप्त हुई और बाद में किस प्रकार मरीचि अत्रि और वशिष्ठ जैसे मुनियों को सौंप दी गई। So then in the 3rd canto it was described. तीसरे स्कंद में ये बताया जा चुका है But Lord Brahma personally ब्रह्म भगवान स्वयं came to do the wedding ceremony.
वो इन सारे संस्कारों में स्वयं प्रस्तुत थे। for the 9 daughters of Kadramamuni. 9 कन्याएं जो थी जो उनकी विवाह उनके उपस्थित थी। The same principle, authority, is arranging everything. ये अथॉरिटी जो प्रिंसिपल जो महाराज बता रहे हैं उसको ध्यान में रखते हैं। If we want to be peaceful in our lives, then we should follow the authority. अगर हम अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अथॉरिटी का पालन करना चाहिए, उनका अनुगत्य रहना चाहिए। The Brahma knows 9 daughters, and he knows also these 9 sages that are suitable for each of the daughters. ब्रह्मा ये जानते थे कि उनकी 9 पुत्रियां कौन हैं, उनके किस तरह का चरित्र है और उनके लिए कौन 9 ऋषि बिल्कुल परफेक्ट हैं। And he perfectly made the arrangement. और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वो व्यवस्था की। It's not difficult. बहुत मुश्किल नहीं। They were very happy in their marriage. और वो सब आनंदित रहे विवाह। They were successful in their marriage. वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। So we should follow the same system, और हमें इसलिए सेम सिस्टम को फॉलो करना चाहिए अरेंज मैरिज। and we will be happy. और हम खुश रहेंगे। Hare Krishna. Any comments or questions? किसी को कोई जिज्ञासा है कुछ प्रश्न है? Thank you, Maharaj. Just wondering why sages accepted the wives. I mean, sages supposed that means they have a desire to be married. I mean, sexual awakened sages, like they are content, they do not desire, but still anyhow they accepted these wives. It means they have a desire to be married. प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं कि हम साधारण तौर पे समझते हैं कि साधु संत जो होते हैं, साधु विशेष तौर पर वो बहुत ही उच्च स्तर पे होते हैं और उनको विवाह की इच्छा नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने श्लोक पढ़े उसमें जितने भी ऋषि थे, साधु थे, इनके हृदय में कहीं ना कहीं भाव आया, जो महाराज ने बताया। तो ये जो प्रश्न है कि ऐसा क्यों है? Sage does not mean pure devotee. साधु का अर्थ ये है कि वो एकदम शुद्ध भक्त हो गए हैं। Especially these sages were saying, विशेष तौर पर जब ये साधु की हम चर्चा कर रहे हैं, they are still on the material plane, not completely pure. ये अभी भी भौतिक स्तर पे ही थे, अभी तक आध्यात्मिक पूर्ण रूप से 100% आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है पहुंचे थे। Therefore, the desire to marry is still there. इसलिए उनकी जो इच्छा थी विवाह करने की हुई। And Brahma knows that, so he arranged for them to get married appropriately. इसलिए ब्रह्मा ये जानते थे कि उन्होंने अच्छे से व्यवस्था की थी। Secondly, दूसरी बात, for civilized people, सभ्य लोगों के लिए marriage is devotional service. विवाह एक तरह का भक्ति का मार्ग है। So it is called ashram. This is spiritual. इसलिए उसे विवाह को जो हम करते हैं उसको गृहस्थ आश्रम बोला जाता है। And marriage is meant for those who have control over their senses. विवाह उनके लिए बताया गया जिनका अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं है। Not those who are controlled by their senses. They're not qualified to get married. जो अपने इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं वो क्वालिफाई नहीं करते हैं विवाह करने के लिए। That is part of our problem. ये हमारे विषय का जो हम चर्चा करने के बाद Tulsi Devi said, तुलसी महाराज ने कहा a person who is harsh should not marry. A person who is harsh
should not marry. जो व्यक्ति कटु होता है, मृदु भावी नहीं होता है, उसको विवाह नहीं करना चाहिए। Why? क्यों? What will be the children the harsh person will produce? उनकी संतान कैसी होगी? Unwanted children. अनचाही संतान होगी। Only those who have control over the senses can marry. जिनका अपने इंद्रियों पे नियंत्रण है, सिर्फ वही विवाह कर सकते हैं। So if someone said, since I cannot control my senses, let me get married, that person is not qualified to marry. इसलिए तो हम देखते हैं कि कोई अगर व्यक्ति कहता है कि मेरा मेरी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए विवाह करना चाहता हूँ, तो वास्तव में वो मतलब क्वालिफाइड नहीं है विवाह करने के लिए। So you see, all these sages, they have controlled their senses to some extent. तो हम यहाँ देखते हैं जितने भी साधु हैं, उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण था, So they should marry. इसलिए उनको विवाह करना चाहिए। Then they can produce good children. इसी वजह से वो अच्छी संतानें उत्पन्न कर पाए। When Kashyapa Muni was forced to have union with his wife, तो कश्यप मुनि को जबरदस्ती उनकी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्थिति प्रकट हुई। he told the wife, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, now you are pregnant. तुम अभी गर्भवती हो, That is mystic power. And the children are demons. तो उन्होंने कहा कि तुम अभी गर्भवती हो और तुम्हारे जो संतान है वो राक्षस हैं। He can see. तो वो देख सकते थे। We should be on that level. हमें उस स्तर पे होना चाहिए, Then we can get married. तब हम विवाह कर सकते हैं। Maharaj, none of us should be married in that case. In that case, none of us should be married. If you don't know how to drive, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे वाहन चलाते हैं and you enter the steering, और आप गाड़ी में बैठ जाए स्टीयरिंग पकड़ के, what will happen? तो क्या होगा? Accident. So if you are not qualified to marry and you get married, what children are you going to produce? अगर हम क्वालिफाइड नहीं है कि किस तरह से विवाह के लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और फिर भी आप विवाह कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की संतान उत्पन्न होगी। All parents are complaining about their children. हर माता पिता अपने बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ कंप्लेन करते हैं। Why? क्यों? No qualification. क्योंकि उनमें कुछ माता पिता में क्वालिफिकेशन नहीं है। Therefore, इसलिए we are bringing unwanted children. इसलिए हम अनचाही संतान उत्पन्न कर रहे हैं। Look at the whole world. पूरे जगत को हम देख सकते हैं, Very chaotic. बहुत ही भयावह है, फैला हुआ है। Control the senses इंद्रियों पे नियंत्रण संयम आवश्यक है। before we can do anything wonderful. You must have control over the senses. जीवन में कुछ भी करना चाहें बहुत सुंदर ढंग से उससे पहले हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। Without controlling the senses, we cannot do anything wonderful, materially or spiritually. बिना इंद्रियों पे संयम के हम ना ही भौतिक ना ही आध्यात्मिक कोई भी चीज को सुंदर ढंग से नहीं कर सकते। और किसी के लिए क्या कर रहे हैं? Hare Krishna. Prabhu. Hare Krishna. Prabhuji, as I embark on a new journey in my life, I'm just asking this out of curiosity. As they say that just do hard work and don't think about the food. So if I do hard work, what I am doing in that case, should I believe that Krishna will give me the result of my hard work, or what is right for me? Will he give
the result of my hard work that I'm doing, and I desire that. I desire that. That's why I'm doing that. Will Krishna give me my results for that, or will He give me what is right for me? Please enlighten me. And please pardon me if I have not conveyed my question properly. No, it's perfect. Thank Perfect. you. Perfect. प्रभु जी का प्रश्न था कि वो अपने जीवन की नई पड़ाव पर हैं और उन्होंने प्रश्न किया कि जैसे हम सब पढ़ते हैं कि हमें सिर्फ परिश्रम करना है और परिश्रम के साथ हमें फल अपने आप जो मैं चाह रहा हूँ मिल जाएगा। उनका प्रश्न था कि जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ उसका फल कृष्ण भगवान मुझे देंगे या जो मेरे लिए सही है उसको देंगे। वो महाराज Krishna give the result of our activities. कृष्ण भगवान हमारे सभी कर्मों के फल देते हैं। All our activities, Krishna will give the result. जो भी हमारे कर्मों में फल देते हैं। Working very hard बहुत परिश्रम करना is not sufficient. सिर्फ बहुत परिश्रम करना ही काफी नहीं है। Donkeys are carrying heavy load every day. They are not the best sense gratifiers. गधे जो होते हैं वो रोजाना बहुत सारे परिश्रम करते हैं, बहुत वजन होते हैं। People who work so hard, they are not the millionaires. जो बहुत परिश्रम करते हैं वो सभी मिलेनियर नहीं होते, बहुत धनी नहीं होते। Some people, they work very, very little and they get more. कुछ लोगों को हम देखते हैं उन्हें बहुत ही कम परिश्रम करते हैं लेकिन उन्हें बहुत धनी हो जाते हैं। So we should use our intelligence. तो ऐसे समय में हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। And the result, our karma, will be wonderful. और इस तरह से हम अपने कर्म अच्छे हो सकते हैं। Not just working hard, we should also think properly. सिर्फ बहुत ज़्यादा परिश्रम पे ध्यान ना दें, हमें सोचना भी चाहिए। And it's best to become a devotee. और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप भक्त बनें। If you become a devotee, Krishna will take care of you completely as he has been doing since time immemorial. अगर आप भगवान के भक्त बनेंगे तो भगवान कृष्ण आपका सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि वो इतने करोड़ों वर्षों से जन्मों से आपका ध्यान रखते हैं। The philosophy of work very hard and enjoy it is nonsense. जो ये विचारधारा है कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करो और उसका आनंद लो, ये बेवकूफ़ों की बात है। Animals are working very hard also. जो जानवर होते हैं वो बहुत परिश्रम करते हैं। What is the use of their working very hard? तो क्या लाभ है? Sense gratification. सिर्फ इंद्रिय भोग। It's dangerous, very dangerous. बहुत ही भयावह है। Of all the living entities, जितने भी हम जीव हैं, ants are the most busiest of all. जैसे सबसे छोटा जीव चींटी को हम देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहती है। What do they get? लेकिन क्या मिलता है उनको? Ant, what do they get? क्या मिलता है चींटी को? They don't sleep. सोते भी नहीं हो। They work 24 hours. 24 घंटे कार्य करते हैं। What do they get? What is the gain? उनको क्या मिल रहा है? Particle of sugar. सिर्फ चीनी का छोटा सा दाना। So, why are you working so hard for nothing? हम क्यों इतना परिश्रम करें जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है? Even if you get a position of a Brahma, अगर आपको ब्रह्मा की पोजीशन भी मिल जाए, and then what? तो क्या होगा उससे? Suffering is still there. जितने हमारे कष्ट हैं वो तब भी रहेंगे। Better to become a devotee, इसलिए आवश्यक है कि हम भक्त बनें and all problems will be solved. और सारे जितने भी हमारे जीवन की समस्याएं सब सुलझ जाएंगी। Eternity. और किसी के लिए क्या करना है? All right. Thank you. हरे कृष्णा। तो हम भक्ति दामोदर स्वामी महाराज का
It's a question, right? Yes, there's a question. अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? Maharaj, his question is how to control one's senses. How to control the senses? By regulation. By regulation. Regulate करके नियमित करा. Not by closing your eyes. That is not the way. आंखें बंद करके चलना सही या सही नहीं. Regulation. Regulate करना. What is regulation? Regulation क्या है? If I want to control my eyes, then I shouldn't look at unnecessary things more than necessary. अगर मुझे अपनी आंखों पर संयम रखना है तो उसका अर्थ है कि मैं सिर्फ जितनी आवश्यकता है देखूंगा उतने देखूंगा. अननेसेसरी चीजें जो हमें ध्यान देने वाली नहीं है उन पे ध्यान ना दूं. If you look at unnecessary things more than necessary, it is problem. अगर आप ध्यान देने वाली चीजें नहीं उन पे ज्यादा ध्यान देंगे और इसके बजाय जिन पे ध्यान देना चाहिए उसके मुकाबले तो ये प्रॉब्लम. Looking at Krishna is necessary. भगवान कृष्ण की ओर देखना आवश्यक है. Therefore, we should always practice looking at Krishna. इसलिए हमें ये प्रयास करना है कि हम भगवान की तरफ चलें. If we want to control our eyes, अगर हम अपनी आंखों पर नियंत्रण रखना so look at Krishna regularly, all the time. इसलिए हम आंखों पर नियंत्रण करने के लिए भगवान की ओर देखें हर समय. So this is the trick of Srila Prabhupada. ये श्री गोपाल जी के द्वारा बताए गए He उपाय हैं. established deities for us. इसलिए उन्होंने विग्रहों की स्थापना की. Deity worship is not in Kali Yuga. It's not for Kali Yuga. जो विग्रह पूजन है ये कलयुग के लिए नहीं है. But Prabhupada put the deities. फिर भी प्रभुपाद जी ने विग्रहों की स्थापना की. Because by looking at the deities, क्योंकि विग्रहों की तरफ देखने से we'll be controlling our eyes. हम अपनी आंखों पर नियंत्रण कर पाएंगे. Look at the deities regularly. विग्रहों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए. Look at devotees regularly. भक्तों को प्रतिदिन आप ये देखें भक्तों को. We'll have control over our eyes. इससे हम आंखों पर नियंत्रण कर सकते हैं. Material object will not attract us again because there's nothing which is compared to Krishna's beauty. जो इस भौतिक जगत की सुंदरता है वो हमें आकर्षित नहीं करनी चाहिए कृष्ण भगवान की अपेक्षा में क्योंकि कृष्ण भगवान का आकर्षित कोई नहीं है. Want to control our ears. अब इसी तरह से हम अपने कर्मेंद्रियों को Hear the activities about Krishna. तो उससे आप भगवान कृष्ण के रिलेटेड चीजों को सुनें. If you hear about Krishna, अगर आप कृष्ण के बारे में सुनेंगे भगवान के बारे में not like what we are doing, ऐसा नहीं हो सकता. not like what we are doing. ऐसा नहीं है वो मिलते जुलते कुछ कर रहा है. You should hear like Parishit Maharaj had Bhagavatam. हमें परीक्षित महाराज की तरह श्रवण करना चाहिए. Parishit Maharaj had Bhagavatam with cell phone. परीक्षित महाराज Did he hear Bhagavatam with cell phone? परीक्षित महाराज के सेल फोन के साथ भागवतम सुन रहे थे. Huh? Because he doesn't have cell phone that time. Is it not? क्योंकि उस समय क्या परीक्षित महाराज को सेल फोन का ये कारण था? Is that the reason? ये कारण है. What are we doing in Krishna consciousness? What are we doing in Krishna consciousness? हम कृष्ण भक्ति में क्या कर रहे हैं? Hovering. We are hovering. हम ऊपर हैं ऐसे, Not deep with it. We're not deep into Bhakti. हम कृष्ण भक्ति में अंदर गहराई में नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर से आ रहे हैं. Rupa Goswami said, रूप गोस्वामी ने कहा है the fish which are on the surface of the water, मछली होती है जो पानी की सतह पर होती है ऊपर. when the fisherman would throw the net, be captured. जब मछुआरा आता है वो जाल फेंकता है वो ऊपर वाली मछलियां सब पकड़ में जाती है. The fish which is deep down the bottom of the ocean, और जो समुद्र के अंदर गहराई में मछली होती है no fisherman's net will reach there. कोई भी मछुआरे का जाल उस तक नहीं पहुंच सकता. What does that mean? इससे क्या हम समझते हैं? If we are floating in our Krishna consciousness, Maya will catch us. अगर हम कृष्ण भक्ति के अंदर सिर्फ ऊपर ऊपर से तैर रहे हैं तो हमें माया आके पकड़ लेगी. If we are deep rooted in Bhakti, Maya will never touch us. अगर हम भक्ति के अंदर बहुत गहराई से हैं तो माया हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी. Parishit Maharaj did not hear anything
except what his guru was teaching him. परीक्षित महाराज ने उस समय कुछ भी और श्रवण नहीं किया सिवाय इसके जो उनके गुरु उनको समझा रहे थे। He was fixed, वो पूर्ण रूप से eye to eye. एक चित्त थे, सिर्फ आंखें उनकी मेल खा रही He never blinked his eye. थी, उन्हें आंखें भी झपकी नहीं, He did not sleep, वैसे सोए भी नहीं, not eating. कुछ खा He भी was नहीं, fixed. सिर्फ एक चित्त। He got Krishna. और उनको कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई। Let us learn the science of Bhakti. आइए हम सीखें कि भक्ति की क्या विज्ञान है। If you don't understand the science of Bhakti or the formula of Bhakti, you will never get it. अगर आप समझेंगे कि भक्ति का क्या फॉर्मूला है, तो आप कभी भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। As Parishit Maharaj did not hear Bhagavatam with cell phone, you see many devotees here, it is in a Bhagavatam class, they are doing japa. Many devotees. परीक्षित महाराज ने सेल फोन नहीं लिया था, यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त कक्षा में बैठते हैं और हरिनाम जप करते रहते हैं। Is that what Maharaj Parishit did? क्या परीक्षित महाराज ने ऐसा किया था? Doing japa when his guru was speaking? जब उनके गुरु बोल रहे थे, तो क्या परीक्षित महाराज जप कर रहे थे उस टाइम? Is that what he did? Cell phone, या सेल फोन लिया? guru is speaking. Parishit Maharaj did like that? परीक्षित महाराज ने ऐसा कुछ किया? What do you think we are doing? हम क्या समझते हैं, हम क्या कर रहे हैं, Or what do you think we are going? और हम किस तरफ जा रहे हैं? We are not on the same path. हम जो परीक्षित महाराज जिस मार्ग पे थे, उस मार्ग पे नहीं हैं। We may be in the movement physically, but we are not in the movement in the real sense. हम इस कृष्ण भावना में संघ से अवश्य जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ शाब्दिक तौर पर, लेकिन असली तरह से जो जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़े हैं। Don't cheat yourself. अपने आप को धोखा मत दीजिए। If you want to be a devotee, be a devotee. अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो भक्त बनिए। If you don't want to be a devotee, don't waste your time. अगर आप भक्त नहीं बनना चाहते तो अपना समय व्यर्थ ना करें। Our system is follow the footsteps of our acharyas. हमारा सिस्टम है कि जो हमारे आचार्य हैं उनके पद का अनुगमन करें। So if we want to attain the same result Parishit Maharaj attained, let us follow the way he listened and heard Bhagavatam. जो हम देखते हैं परीक्षित महाराज जो हमारे हैं, उन्होंने जिस तरह से किया हमें वैसे ही श्रवण करना चाहिए। Arjun, अर्जुन cell phone, अर्जुन के पास सेल फोन था, Krishna was speaking to him. You use cell phone? जब कृष्ण भगवान अर्जुन से बोल रहे थे, क्या वो सेल फोन यूज कर रहा था? You were doing japa? क्या वो नाम जप कर रहा था उस टाइम? When Krishna was speaking to Arjun, he was doing japa? कृष्ण Yes. भगवान जब अर्जुन से बोल रहे थे, क्या नाम जप कर रहा था? Sri Bhagavan Vacha. Yes, 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 yes. Hare Krishna, Hare Krishna. Touch Renu. Yes, 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 yes. Hare Krishna. Arjun was doing like that. क्या अर्जुन इस तरह से कार्य कर रहा था? Don't waste your time here. अपना समय व्यर्थ ना करें यहाँ पर। If you want to be a devotee, be a devotee. अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से भक्त बनिए। If you are here and you are not being a devotee, you will confuse others who would like to be devotees. अगर आप यहाँ पर हैं और भक्त नहीं बन रहे हैं तो आप खुद भी कंफ्यूज रहेंगे और दूसरों को करेंगे। So this is how to control our senses. Our tongue was so easy for chanting Hare Krishna and taking prasadam. और इस तरह हम देखते हैं कि अपनी इंद्रियों में कैसे सही फायदा होता है। जिह्वा के लिए आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। So learn how to dance for Krishna. और जो आपके चरण हैं उनको भगवान की सेवा में नृत्य करने चाहिए। In this way, our senses will be controlled. इस तरह से हमारे जितनी इंद्रियां हैं वो संयम में हैं। If you don't engage our senses in Krishna, the senses will take us somewhere. अगर आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो आपको कहीं और मिलेगा। Want to control the senses. आप इंद्रियों को सही चाहते हैं। We're still eating burger outside, अगर आप बाहर का कुछ खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, little prasadam, little burger. थोड़ा सा प्रसाद में कुछ बाहर का कुछ खा रहे हैं, What is that? ये किस तरह का संयम होगा? We are simply deceiving ourselves. हम सिर्फ अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। We cannot control the senses like that. इस तरह से हम अपनी इंद्रियों पे कभी संयम नहीं प्राप्त कर सकते। Want to be a brahmachari? अगर आप ब्रह्मचारी बनना चाहते We're still going to the net, हैं, तो भी आप इंटरनेट पे जाते हैं unnecessary things. और फिजूल की चीजों पे समय व्यर्थ करते हैं। Want to be a brahmachari?
ऐसे आप समझदारी नहीं होनी चाहिए। It's a joke. It's a big ये लोग joke. मजाक कर रहे हैं। They should learn the process properly and follow it properly. They will succeed. इसलिए हमें पूर्ण रूप से ढंग से प्रक्रिया को सीखना चाहिए, भक्ति का मार्ग और उसको पालन करना चाहिए। Srimad Bhagavatam ki Srimad Prabhupada ki हरे कृष्ण। तो दोस्तों